Today we are going to discuss what is an anecdote. We define anecdote as a short narrative, meaning story of an interesting, amusing, or biographical incident. Anecdote is like story within a story. It can be used in an essay, a speech, or even within a poem. So, what are the characteristics of a anecdote? Firstly, it is a very short story, mostly limited to 2 or 6 lines. Secondly, it should be entertaining or humorous. Thirdly, it is biographical in nature. ऐसी स्टोरी जो कि आपकी खुद की लाइफ के बारे में हो या आपके किसी परिचित के लाइफ से रिलेटेड हो. Because it is short, it focuses on one character. Then the last characteristic is it should be relevant to the topic at hand, meaning जो भी डिस्कशन का टॉपिक है उससे रिलेटेड एनेक्डोट या स्टोरी होनी चाहिए. There are different types of anecdotes. So anecdotes can be humorous meaning comic effect produce करने वाली. Anecdotes can also be reminiscent, लाइफ के किसी पुराने इंसिडेंट से रिलेटेड. इट हैपन्स अ लॉट विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स. जब भी हम किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो अक्सर हमसे कहते हैं कि हमारे टाइम में ये हुआ था. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेमिनिसेंट एनेक्डोट. देन एनेक्डोट्स कैन ऑल्सो बी फिलोसॉफिकल, जो कि आपको कोई लाइफ लेसन सिखाए. इंस्पिरेशनल, जो कि आपको इंस्पायर करे. अगेन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स. जब आप पढ़ाई नहीं करते हो तो जनरली वो कहते हैं कि आप लोगों को इतनी सुविधाएं मिली हैं, हमारे टाइम पे तो हम सड़क पर स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंस्पिरेशनल एनेक्डोट. Then lastly, an anecdote can also be cautionary. Cautionary meaning जो कि आपको warn करे. फॉर एग्जाम्पल आप किसी जंगल में घूमने गए हैं, वहाँ पे आपको जो आपका गाइड है वो कहता है कि जो है रात को बाहर नहीं निकलना है. एंड ही टेल्स यू दैट 2 साल पहले एक टूरिस्ट रात में जंगल की तरफ जाता हुआ देखा था और उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा. सो द guide to the story is warning you not to go inside the jungle at night. So, this is an example of a cautionary anecdote. Then we come to the functions of anecdote. Why anecdotes are used. Firstly, to bring in an element of comedy. Secondly, to make a conversation or discussion more meaningful, to provide depth to the discussion. Thirdly, sometimes anecdotes help in the development of a character. For example, in a novel, there is a character of an old man, and in an anecdote, he tells us that when I was in Nainital as forest officer, I had come across a lot of tigers. है ना, वो आपको क्या स्टोरी सुना रहा है अपने पास्ट के बारे में कि जब वो नैनीताल में था, एक फॉरेस्ट ऑफिसर था वहाँ पर और उसने बहुत सारे टाइगर्स उस टाइम वहाँ देखे. So you get to know about this character that he was by profession a forest officer when he was young. So anecdotes can be revelatory about a character. Then lastly, anecdotes make a narrative more personal and interesting. You will find a PDF about anecdotes in the comment box below. And for more such content,
subscribe, and keep watching the channel. Thanks a lot.